Hello, students, and a very welcome to your EVS class, and a very good morning to all of you. So, students, we are doing chapter 5 food, and we had read the chapter. I had sent a video in which I had introduced the chapter. Introduce means I had told why food is important for us and from where do we get our food. So, I had told you that we get the food either from plants or animals. Now, plants they can make their own food, they are self sufficient. They can make their own food. How? They can make their own food by taking the carbon dioxide from the air, water from the soil, and in taking the sunlight. But हम लोग क्या ये सारी चीज़ें लेके खाना अपना बना सकते हैं? नहीं. हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते. एयर सनलाइट लेके खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते. सो वी आर डिपेंडेंट. हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, आश्रित हैं हम लोग के खाने के लिए. So when we are dependent on plants and animals, we have to see what food we get from plants, what food we get from animals. Now people who are eating food which they get from plants, they are known as vegetarian. Vegetarian उन लोगों को बोलेंगे जो सिर्फ शाकाहारी. ठीक है, वो लोग प्लांट से जो भी अनाज या जो भी फूड मिलता है वो लोग उस पर डिपेंड करते हैं. एंड नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, the people who eat fish, meat, egg, they are called non-vegetarians. Okay, now if you go to different parts of India, you will see that people they are eating different kinds of food. जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप झारखंड या बिहार में ले लो तो वहाँ people क्या खाते हैं, लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? दाल, रोटी, चावल, सब्जी. So this is their main food. It is their staple food. Okay, it is their staple food. If you go to south, there what you will find, people like idli, dosha, vada. So that is their staple food. वो वहाँ का मेन खाना हो जाता है. तो staple food is nothing, it is the main food in any part of a country. If you go to a foreign country, there the main food of the people will be different, so it will be the staple food of the people in that country. Okay, now there are different types of food which we get from plant. There are cereals, there are pulses, fruits, vegetables, oil, seeds, spices. Today we will see about the few of them. The first one is cereal. Cereals means what? अनाज. अनाज में क्या क्या आएगा आपका? गेहूँ, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा. So we are going to see about these things only. Now these cereals, wheat, rice, maize, how they are grown? They are grown by the farmers in the field. The seeds are first put in the soil. पहले बीज को बोया जाता है, फिर इससे फसल तैयार होता है. फसल को किसान क्या करते हैं? जब वो पक जाता है फसल की कटाई करते हैं. कटाई के बाद फसल को सुखाया जाता है, उससे चावल गेहूँ निकाला जाता है. कैसे निकाला जाता है? आपका जो अनाज तैयार हो गया उसके ऊपर एक छिलका रहता है जिसको चैफ बोलते हैं, उसको निकाला जाता है. गेहूं में भी वही है, चावल में भी वही है. चावल को क्या बोलते हैं? छिलका के साथ धान. मम्मी से आप पूछना, वो धान बता देंगे क्या होता है. उस धान के छिलके को निकाला जाता है, अंदर से चावल निकलता है. गेहूं का भी वही प्रोसेस है. वहाँ से अनाज तैयार करके किसान मार्केट में बेचते हैं, मार्केट से हम तक पहुँचता है. So this is the process by which a seed is grown into a plant. Okay, now see here how the cereals they are reaching to us. They are the seeds of plant grown in chlorophyll. Means cereals are the seeds. The crop of any plant that we grow for food is known as the crop. Means crop is any plant that is grown for our need and for food. Now when the seeds of cereals ripen, means जब हमारा अनाज का पौधा तैयार हो जाता है, ripen means पूरी तरह पक जाता है. they are harvested. Harvested means they are cut and gathered. फसल को काटा जाता है. Then the seeds are separated from the plants. वो जो बीज है उसको प्लांट से अलग किया जाता है. The chaff, और मैंने कहा था बीज के कवर को हटाया जाता है जिसको chaff बोलते हैं. एंड बाय द वे राइस विथ इट्स कवर्स इज नोन एज पैडी. देखिए यहाँ धान का पिक्चर दिया हुआ है. धान को हम लोग क्या बोलेंगे? पैडी. सो दिस इज द वे अ सीरियल रीचेज अ कॉमन मैन. नाउ कम टू पल्सेस. पल्सेस मीन्स दाल. मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, अरहर दाल.
You ask your mother, you will come to know. Even in pulses, what happens? Pulses are seeds. They are seeds of the plant. And pulses may be chilka hota hai. There is a covering in dal also. First the covering is removed and then the seeds are taken out from that pod. And the seeds, they are grown inside a pod. See, here this is a picture of a pea. These are the seeds and this is the covering, which is the pod. So all of you know, मटर तो आपने देखा ही होगा, ऊपर वाले छिलके को हम लोग बोलते हैं pod. The whole of the pea is known as the pod, and the seeds, the peas are taken out from inside the pod. And dal हम लोग ऐसे कच्चा नहीं खा सकते. We have to cook the pulses and then we have to eat. Even in case of pulses also, the farmers, they grow the pulses in the field, then they process the crops. वो लोग crops को, अनाज को पूरी तरीके से तैयार करके मार्केट में बेचते हैं, and from there we are able to buy it. Now come to fruits and vegetables. You all are familiar with different types of fruits, different types of vegetables which we are eating. फ्रूट्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एप्पल्स, many fruits are there. आप लोग सभी खाते ही होंगे फल. वेजिटेबल्स भी हम लोग खाते हैं. बट वेजिटेबल्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, हम लोग सबको सब्जी ही बोलते हैं, लेकिन वो प्लांट का अलग अलग पार्ट्स है. जैसे यू आर ईटिंग रेडिश, यू आर ईटिंग कैरेट, आप लोग मूली खाते हो, आप लोग गाजर खाते हो. दीज आर व्हाट? दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट. Okay, you are eating cauliflower, फूल गोभी, that is a flower of a plant. Then you are eating palak saag, band gobi, these are the leaves of the plant. Then you are eating this dry fruits like your almonds, अखरोट, बादाम, पिस्ता खाते हो. these are seeds, ये लोग बीज है प्लांट का. Then काजू किशमिश, these are fruit of the plants. Then this peanuts or your groundnut, these are again seeds of the plant. Then your potato, onion, these are stem. Okay, ये ज़मीन के नीचे उगता ज़रूर है, but these are the stem of the plant. तो मेरे कहने का मतलब है, we are eating each and every part of the plant. Either it is stem, root, flower, fruits, we are eating each and every part of the plant. So today we will see only about these two things, cereals and pulses. Rest in the next class.